Assalamu alaikum students. Lastly, we have read about the parallelogram law of vector addition. As we were having the two vectors represented by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is given by that very diagonal of the parallelogram whose tail coincides with the tail of two vectors. And finally, we got the equation for resultant, and that was r is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta, and the direction of resultant came out to be tan of alpha, or alpha equals to tan inverse b sin theta over a plus b cos theta. Today we have to read about special cases. What special cases? Like now we have read about the parallelogram law of vectors. Now we have to read like this. The number first is if if theta equals to 0. What does it mean? That means that is vector A and vector B both are in same direction. Both are in same direction. As first they were like this. It was like vector A, it was like vector B. Then we have to complete the parallelogram, and this was the picture. But now the case is that if A and B both are, this is A, vector A, and now B is not at some angle theta, it is at an angle of theta which equals to 0, that is B is along is in this very direction. So the two vectors are now as that is vectors are collinear, or vectors are, yeah, exactly, they are collinear, they are having an angle of theta. Parallel vectors, angle theta equals to 0. Now in this very case, therefore if we have to calculate r, how much will be r? So r equals to under root of, it is a, it will be a square plus b square plus 2ab cos of 0. So equals to under root of a square plus b square cos 0 equals to 1. It comes simply 2ab because cos 0 equals to 1. You have to remember. So it comes out to be equals to under root of a plus b का whole square. Square and root leaves. So simply r comes out to be, how much is r? R equals to a plus b. This is the resultant. So when the two vectors are parallel, when two vectors are parallel or in the same direction, then their resultant comes out to be simply the sum of the vectors, sum of the magnitude of the vectors. वही तो आया था जब हमने कोलिनियर पढ़ा था. कोलिनियर में हमने पढ़ा था इफ दिस इज अ 15 न्यूटन वेक्टर और उसी डायरेक्शन में 10 भी एक्ट हो रहा है, तो उनका जो रिजल्टेंट आ रहा था वो कुछ ऐसा था. ये हमारे पास पहला वेक्टर था, और जब दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में था तो हम उसका जो टेल था, दूसरे वेक्टर का टेल हम इसके हेड से ज्वाइन कर रहे थे. अगर मान लो ये यहाँ तक 10 था, ये यहाँ तक फिर से 10 है, तो टोटल में हम बोलेंगे ना रिजल्टेंट द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट अप टू द हेड ऑफ सेकंड. तो 10 plus 10 20 is the resultant. So same is the case here. If theta equal to 0, these are the special cases which we have. This is the formula which is going to be used, but this is now applicable to every case. If theta is equal to 0, that means both the vectors are in the same direction. That is theta among them is 0. Then use this very formula, r comes out to be a plus b. Now if we have to calculate the direction of resultant, नाउ ये जो रिजल्टेंट है ये भी किस डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो ये कितना एंगल बना रहा है? ये 0 बना रहे हैं. देखते हैं आंसर 0 आता है. लेट अस सी वेदर द आंसर इज 0 और नॉट. नाउ tan ऑफ अल्फा इक्वल्स टू, वो किसके बराबर था? वो था बराबर b साइन ऑफ थीटा. साइन थीटा तो 0 है, यहाँ पे साइन थीटा तो 0 है, प्लस फिर क्या था? a प्लस b cos ऑफ 0 इक्वल्स टू साइन 0 इज 0. साइन 0 का वैल्यू 0 हो तो 0 इंटू बी कितना आ जाएगा? ऊपर 0 ही आ जाएगा, बाय ए प्लस कॉस 0 इक्वल टू 1. सो ए प्लस बी आ जाएगा. 0 से इन दोनों को डिवाइड कर, इन दोनों से 0 को डिवाइड करना है तो आंसर 0 ही आ जाएगा. दिस विल बी 0. देयरफॉर tan अल्फा इक्वल्स टू 0.
which implies अल्फा इक्वल्स टू 0। जब अल्फा ही 0 है, अल्फा है क्या? अल्फा वाज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ वेक्टर ए। रिजल्टेंट रिजल्टेंट भी तो इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ए है, वही तो हमारे पास आ रहा था। So whatsoever earlier cases we have read, we can calculate it from here. Second special case is, the first special case is when the theta is, second is if theta equals to 90 degree. What does it mean? It means one vector is like this, vector A, and we are having another vector like this. Is it okay? Now what we have to do, we have to calculate their resultant. This is the 90, or you can see one vector like this, and then you can displace it. You can make it like this. This is the angle between vectors. Here the inside angle is also 90, this is also 90, both are 90. So if theta is 90, that means the vectors are perpendicular to each other. When theta is 90, that means vectors are perpendicular to each other. अब जरा r निकालते हैं, r निकाल के देखते हैं. Then r equals to, how much is r? R equals to under root of a square plus b square plus 2ab cos of 90. cos 90 0 होता है तो ये सारी टर्म वैनिश हो जाएगी, ये सारी टर्म 0 बन जाएगी, बिकॉज cos 90 इज 0. सो r कितना बचेगा? r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. So this is the resultant when you have to calculate. This resultant comes out to be when the two vectors are perpendicular to each other. Is it okay? ठीक है ना? When the two vectors are perpendicular to each other at that time, the resultant comes out to be a square plus b square. अब अगर इसमें tan of alpha निकालेंगे, tan of alpha, resultant की डायरेक्शन क्या होगी? Again b sin of 90 over a plus b cos of 90. sin 90 तो 1 होता है, cos 90 तो 0 होता है. So tan alpha is equal to, ऊपर b आ जाएगा, नीचे सिंपली a ही आ जाएगा, बिकॉज 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, b by a, which implies alpha is equal to tan inverse b by a. ये आ जाएगा आंसर. और एक स्पेशल केस है हमारे पास, विच इज द लास्ट वन. इफ थीटा इक्वल्स टू 180. what does that mean? That means if this is vector a, then somehow vector b is opposite in direction, so that can be from here. वेक्टर a मैंने पहले बड़ा बना दिया, वेक्टर a मैंने बड़ा बना दिया, वेक्टर b मैंने छोटा बना दिया. और एक कंडीशन ये भी हो सकती, अगर ये वेक्टर a है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना ही है वेक्टर a, लेकिन जो वेक्टर b है वो इससे कहीं गुना बड़ा है. तो दोनों में अगर पहले वाले में आप देखोगे तो रिजल्टेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर, दैट इज वेक्टर ए. रिजल्टेंट की वही डायरेक्शन जो वेक्टर ए की, लेकिन इसमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन ए से अपोजिट है, यानी कि यहाँ पे जो अल्फा होगा वो होगा 180, लेकिन यहाँ पे जो अल्फा होगा वो होगा 0. पहले तो थीटा इज 180 in both cases, here as well as here, because the angle between two vectors is 180. One is in this very direction, second is in this very direction. But here the first vector a, that is bigger, here the second vector, that is b, that is bigger. So यहाँ पे जो a वेक्टर वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, रिजल्टेंट बिगर डायरेक्शन में आ जाएगा, बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में आ जाएगा. सो अल्फा here is 180 and alpha here is 0. अब जरा यहाँ पे अगर हम r देखते हैं, r किसके बराबर होगा? r is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos of 180. cos 180 is minus 1, so it comes out to be a square plus b square minus 2ab. So that is simply, that comes out to be
r equals to under root of a minus b का whole square and root leaves, or you can put it like this: if it is a minus b, it can be b minus a. That is the two cases which arise here. So you can simply put it here: r is equal to a minus b. So the resultant is equal to the difference of two vectors. And then I have already shown the direction of resultant tan alpha. In one case it comes out to be 0, and in another case it comes out to be 180. So just go through these very cases. Inshallah, very soon I will be with a new lecture. Till then, Allah Hafiz.